and you also negotiate with yourself, right? तो दिल कुछ कह रहा होता है, दिमाग कुछ कह रहा होता है, and there's always a question what to do, why should I go for this, why should I opt for this, be it even going out for lunch or dinner with friends. So I think it is something which we do, which we use every day. I'll just take 5 minutes in just explaining what focus methodology is that we use for the corporate world, and then inshallah we'll be connecting the dots with how each and everything can be applied in the daily life. So, Anam, is it okay if we can just talk about the focus methodology for like 2 or 3 minutes, and Perfect, then perfect. inshallah. So yes, exactly. So the first part and the first question would be that, the focus methodology that you use in your programs, what is it all about? Okay, so this is something which, again, when I studied negotiation in University of Michigan, and then there was always something about how to make it even more relevant for the audience in Pakistan. So we had a lot of interviews, we had a lot of researches done in the corporate world, and then this is something which I came up with. So it's nothing. It's just that if you use FOCUS, you will be able to negotiate better. So F is just basically stands for the framework, because even before you start your negotiation, अभी हमने start नहीं किया negotiation. There are few things that we should keep in mind, and I'll be very quick about it because once we get into details, then we'll have more discussion. The first thing, यार आपका perception क्या है? Because perception plays a very important role. If I think, for example, Anam will never listen to me, I will never be able to convince Anam for anything. How will I act? How will I behave? And that will change everything and the outcome for the negotiation, right? In the framework, we talk about quantitative analysis of your negotiation style and the negotiation style of the other party, and how to bridge the gap. We also talking about what you can bring on the table, right? It's not just one deal, it's not just one argument. Why should I listen to you and why I should not listen to others? So that's basically overall is the F of focus. We move on, and that is O stands for basically other party analysis, because no matter how good you are, you need to know why someone is demanding something, be it your son, be it your boss, be it your subordinate. Then we need to know exactly what they want out of this. There's always a way for a win-win situation, right? किस तरह के questions पूछने हैं, how to analyze BATNA. And BATNA is nothing, it's just best alternative to a negotiated agreement. If I don't do this, what is the next available option that I have? Third thing that we do is how to use psychological tools, right? So we talk about the tricks and the traps and the tactics, be it heuristics, be it reciprocation, be it confidence, and ये सारी चीजें आपको negotiate करने में कैसे help करती हैं. And then last two things, U and S. U is unleashing the power of emotional intelligence. So we spend around 10% of the day in understanding how your emotions can have an impact on other people's emotions, because we all know that emotions are contagious like coronavirus. So if there is someone who is positive in front of you, eventually that positivity will transfer. If someone is negative, that will transfer. So how to leverage your EI in getting things done your way. And the S stands for setting the stage with the help of your communication skills, right? So it's not what's coming out of your mouth. In fact, according to research, it's only 7%. The rest is all your body language, how you speak, your tone of voice, your accentuation. So that's the complete package that we have, and I call it focus methodology. Very well explained, Naveed. And probably as we move on further in this session, we'll be applying this focus methodology on few daily life scenarios as well. There are few comments that people cannot hear us. Please comment in the chat box if majority of you can hear us, and we'll try to optimize the volume levels from our end as well. But it's all good to go on our side. So we'll just move on to the next question, Naveed. There is Mhm, a slight misconception that probably negotiations is only for salespeople. How do you take that? mhm. Like mostly negotiations ke jo even trainings hoti hain ya jinse discussions ho rahi hoti hain, and the people who are being taught, they're just the sales department in any organization. So what's your take on that?
ओके, दैट इज द क्वेश्चन अनम, जो हर कोई पूछता है कि यार नेगोशिएशन तो सिर्फ सेल्स वाले करते हैं ना. दैट्स नॉट द केस. As we began this program, negotiation is part of your daily life. Even according to Harvard, this is the top 10 skills that leaders need today. Because आप सुबह उठते हैं, आपने अपने ड्राइवर के साथ भी नेगोशिएशन करना है, आपने घर वालों के साथ भी नेगोशिएशन करना है, आपने ऑफिस में भी लोगों के साथ नेगोशिएशन करना है, आपने अपने बच्चे के साथ भी नेगोशिएशन करना है, हफ्ते को क्या करना है क्या नहीं करना, दैट इज ऑल्सो नेगोशिएशन. कौन सी गाड़ी खरीदनी है, कौन सा घर खरीदना है, that's also negotiation. From where to buy the products, that is also negotiation. And as I said, you also negotiate with yourself, right? And I'm sure, again, just write yes if this has happened to you in past, right? कभी ऐसा हुआ है, and I'm sure everyone will say yes, but I just still want to see. दिल कुछ और कह रहा था और दिमाग कुछ और कह रहा था, और आप एक कश्मकश में थे कि यार मैं क्या करूं. Does it happen? I just want to see yeses. I don't know if you have this tick option available in Zooms. Okay, so Hira is saying so many times. Hussein, yes. Farhan, yes. Oh, so Yes. And majority goes with yes. right. So if you are saying yes, and if you are not in sales organization, this is the skill that you need to have. Okay, and I love to see people because because of COVID we have had a lot of online sessions. So if possible, if convenient, turn on your videos. I think it's just better if we see each other. Anyway, so a lot of yeses, right? So I think that Anam, आपका question जो है वो 43 लोगों ने जो है reply किया है उसका, that they do, and that's what we'll talk about inshallah today. Perfect, perfect. So here we are clear that negotiation is not just for salespeople and sales managers, but it's for across the organization. You know, for every individual, he or she has to negotiate on like personal levels, on organizational levels, be it their, in their teams, with their employers, probably in their interviews, when they're discussing the pays maybe. So there can be a lot of different scenarios that can be created. So now we just move on to the main part, Naveed, where you tell us that how focus methodology, or this framework that you just discussed with us, how it can be applied to a daily life. And probably you can come up with a few scenarios so that it's very easy for Yeah. people as well to engage. Okay, all right. Thank you, Anam. And what I'll do is I'll be asking a lot of questions, and not the questions, yes and no questions, because I think that'll just keep me motivated and that'll just keep everyone engaged as well. As I have only 20-25 minutes, so I'll just try to be very quick about things, because usually it's a 1 or at least 2 days session जो हम लोग करवाते हैं. Starting off हमने कहा कि फोकस के अंदर we said कि यार framework आपका जो है वो क्या है. Is it a win-win mindset? Again, just write yes or no. Do you think people always have a win-win mindset when they are negotiating, या जब भी किसी से बात कर रहे हैं, बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार मेरी मानो या उसकी मानो? So do you think people have win-win mindset? I have a wonderful audience today, Anam, because that's one Exactly. thing which which is the essence. Unfortunately, a lot of people think कि यार या तो मैं मानूंगा तो मैं जीतूंगा, या तो अनम की मानी जाएगी और अनम जीतेगी. It is not possible कि हम दोनों किसी चीज पे जीत जाएं. So first of all, एक टूल जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, and I would love to give it to you guys, and that is see, do, get. It's a very generic tool, but I just love it. And that is, यार जैसा देखोगे ना वैसा करोगे, जैसा करोगे वैसा मिलेगा. Okay, so for example, if I again coming back to this system, whatever organization you're working for, you think यार इस कंपनी में कुछ भी कर लो, जब तक सिफारिश नहीं होगी ना कुछ नहीं हो सकता. और मिस्टर बी, विच इज अनम थिंक्स यार इस कंपनी में जो मेहनत करता है ना वो बहुत आगे निकल जाता है. ऑलराइट, सो इवेंचुअली व्हाट विल हैपन, if I had this perception कि इस कंपनी में जब तक सिफारिश नहीं होगी कुछ नहीं हो सकता, I will never work hard, right? If I'll not work hard, then there is no way I'll get promotions, and if I won't get promotions, I'll say देखा मैंने कहा था इस कंपनी में कुछ नहीं हो सकता. At the same way, अगर अनम समझती है कि नहीं यार this is something, I'll work hard, I'll show results, I'll give numbers, and then eventually what's going to happen, she's going to work hard, right?
and then she will get the results, and then she will say देखा मैंने कहा था इस कंपनी के अंदर अगर मैं मेहनत करूं तो there is a lot that can be done. So the thing is how you see situation. So सबसे पहला जो काम होता है ना negotiation के अंदर वो ये सोच को तब्दील करना होता है, and again we have a lot of activities for that कि यार ये हो सकता है, मैं इसको इस चीज के लिए मना सकता हूं. ओके, अगर ये सोच ही नहीं होगी तो आगे बात ही नहीं चल सकती. So if we are not even on the negotiation table right now, what we are saying is that the mindset has to be positive in a way कि यार ये possible है. जब पहली बार पाकिस्तान की आज़ादी की बात की होगी तो ये सोचा होगा ना कि भाई ये हो सकता है. यू नो जब चांद पे जाने का सोचा था तो ये सोचा होगा ना कि ये हो सकता है, and then you move forward, right? So see, do, get. Again, be it maid, be it your drivers, be it your subordinates, be it your boss, koi bhi ho. Pehli cheez is this. I have a few, let me show you something. I think I have it for audience. And that is, let me just, tell me if you see an old woman or a young female or both. So आप तीन में से कोई एक चीज लिखेंगे, young, old, या both. All right, and then we'll also prove it right now. It is possible that, again, I'll stop here, I'll show you first, hold on. Okay, share the screen. Okay, G, so what do you guys see? Old, young, or both? Okay, a lot of people who can see young, a lot of people who can see both, a lot of people who can see old. Scary. Okay. Okay. All right. Thank you. So अब हम लड़ने मरने पर तैयार हो जाएंगे कि नहीं मैंने ये देखा था. So it's about how you see negotiation. So first of all, yes, is it possible? It is possible. What do you guys see? Whatever comes to your mind. क्या नजर आ रहा है? These Two are like faces. two people, two faces, face to face. उमर इब्राहिम ने सही जवाब दिया क्योंकि उन्होंने दोनों जवाब दे दिए. Okay, two people negotiating, soulmates. All right, so we have a lot of people with creativity here. Okay, तीन है या चार हैं? 3 or 4? 3 or 4? Exactly. So that is the first thing we start off with कि यार आपका जाविया क्या है. जब तक आपका ये क्लियर नहीं होता जाविया, nothing is going to change. So let's say हम लोगों ने बात कर ली कि यार ठीक है, this is right, we'll believe, we have this mindset that there's always a way to have a win-win mindset, there's always a way that how we see things may not be right. Third thing जो negotiation के अंदर हम लोग करते हैं ना usually, वो करते हैं mythical fixed by assumption. और वो कैसे इस्तेमाल किया जाता है again in a daily life. हम लोगों से यही पूछते हैं कि क्या आपको लगता है कि यार there is a wait for a win-win, they say no, there is no way, and I'll win and I'll win, and a lot of people would say कि नहीं, there is a win-win situation possible. एक सवाल मैं उनसे पूछता हूँ, बल्कि एक्टिविटी होती है कि अगर आप यू टू पीपल, वी कैन नॉट डू इट राइट नाउ, सो वी आई थिंक विल नॉट जस्ट स्पेंड टाइम हियर, कि अगर आप लोगों से कहा जाए कि आप लोग एक ही टीम के मेंबर हैं, राइट, और जिस टीम ने सबसे ज़्यादा आर्म रेसलिंग के अंदर पॉइंट्स ले लिए वो जीतेगा, eventually what will you do? Just chat, what will you do? Arm wrestling कर रहे हैं, eventually whatever team gets the highest score will be the winner. What will you do in that situation? Put in effort to win. Okay, बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे, try to win, make a good effort, right? Eventually you will give your 100%, you will try your hard, but अगेन मैं बात अगर ये कहूँ कि मैंने तो ये कहा था कि आप दोनों एक टीम हैं और जो सबसे ज़्यादा स्कोर करेगा वो जीतेगा. So the ideal answer to this was there is a way for a win-win situation, and that is you let me win, I let you win. You let me win, I let you win.
इवेंचुअली क्या होगा, यू एज अ टीम विल हैव द हाईएस्ट स्कोर, बट कोई करता नहीं है। परसेप्शन यही होता है कि यार या तो मैं जीतूंगा या तो सामने वाला जीतेगा। सो एनीवे, सो दैट इज व्हाट द फ्रेमवर्क इज। फ्रेमवर्क के अंदर अनम एक दो तीन चीजें और होती हैं, एंड देन आई थिंक विल जस्ट मूव ऑन टू द अदर थिंग्स। एक चीज ये होती है कि यार नेगोशिएशन इज नॉट अबाउट लाइंग, बिकॉज नेगोशिएशन के अंदर अगर हम बात करें कि यार व्हाट्स द इजीएस्ट वे टू नेगोशिएट is to lie, but that's something which should not happen. So we should always make sure कि यार झूठ नहीं बोलना, धोखा नहीं देना, गलत बात नहीं करनी, and then we focus on the negotiation that is supposed to be done. In fact, let me just talk about a few things जो कि बहुत ज़्यादा आपके काम आती हैं. What would be your negotiation style? अगर आप लोगों से पूछा जाए कि what would be, आप किस तरह से usually negotiate करते हैं? Soft, honest, factually fair, understand his demand. Okay, all right. अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, और there is one organization which has been built on this concept, which is now almost $4 billion company, and उसका concept simple है जो हम negotiation में इस्तेमाल करते हैं, और वो ये है कि यार मुझे आप बताएं, there is one young 14-year-old 15-year-old boy, उसको, मेरे पास तीन लोग हैं जो उसको कन्विंस कर सकते हैं, उसके साथ नेगोशिएट कर सकते हैं। एक 15-year-old अनदर बॉय जो उसी सेगमेंट से ताल्लुक रखता है, एक 80-year-old लेडी जिसको वो जानता नहीं है। ओके, तीनों को नहीं जानता, तो ऑप्शन है 14-year-old बॉय के लिए 14-year-old बॉय, सेकेंड 80-year-old फीमेल, थर्ड some Gora from the US who is 45 years old and he's talking about the same product. In तीनों में से usually what do you think who will be the better person to motivate that 14-15-year-old kid? Right? Same age. So the concept of relevance always plays in negotiation. अगर आप मेरे लिए relevant नहीं है ना जिंदगी में, तो शायद आप कोई बात करेंगे तो भी मुझे समझ में नहीं आएगी। वो इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो गलत है, वो इसलिए नहीं आएगी कि मुझे लगेगा कि यार इनको क्या पता मैं क्या बात कर रहा हूँ। अगर एक आपको सलाह कोई डॉक्टर दे रहा है वर्सेस एक चलता फिरता आदमी दे रहा है, अगर एक ही जो है वो बात कह रहे हैं दोनों, so the weightage of doctor will always be more than the weightage of the other person. So always try to be relevant. So for example, there is someone जिसके लिए emotions play a very important role. ओके, सो अगर आप अपनी कॉन्वर्सेशंस के अंदर इमोशंस को लाएंगे, सो देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि आप अपनी बात मनवा सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिंदगी में जो बड़े बोलते हैं काम की बात करो एंड दैट्स इट, सिर्फ काम की बात करो और कुछ नहीं करो। एंड देयर इज अनदर ग्रुप ऑफ पीपल जो कहते हैं कि यार पहले तो हमारा कनेक्शन होना चाहिए, तो बच्चे कैसे हैं, बीवी कैसी हैं, क्या करते हो, क्या हॉबीज हैं, सो दीज आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। तो आप अगर नेगोशिएट करना चाह रहे हैं विद द पर्सन जो कि बहुत टाइम सेंसिटिविटी उसकी बहुत ज़्यादा है, ही इज़ ऑलवेज टू द पॉइंट, ही इज़ वेरी फॉर्मल, उसके पास जाके अगर आप यार यार करोगे और मैं घूमने गया और मैं चलने गया करोगे, तो विल यू एवर बी एबल टू गेट दिस योर जॉब डन? नो। सो जो अब्दुल खान खान ने कहा ना कि यार वी ऑलवेज हैव टू मेक श्योर कि वी आर रेलिवेंट, टू द पॉइंट, और उसके लेवल पर आकर बात करेंगे, तब ही हम बात कर पाएंगे, उसके अलावा नहीं कर पाएंगे। नेगोशिएशन का एक और एलिमेंट होता है बड़ा इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज परसीव्ड फेयरनेस। तो एक होती है फेयरनेस और एक होती है परसीव्ड फेयरनेस। मुझे एक बात बताएं, मुझे अनम ने जो है ना, वो अभी कितने हमारे पास लोग हैं, 124 लोग हैं, अनम ने मुझे 124 लाख रुपए दे दिए। ओके, एंड शी सेड कि यार सब लोग जो हैं वो ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लें 1-1 लाख रुपए और वो आपसे ले लें, will you take it? And it's all official, nothing under the table, no strings attached, you don't have to do anything, it's just your reward for attending this session. इतने शरीफ लोग कहाँ से लाती हो ना? I'm quite surprised. I was surprised to see few no's in the beginning, but then people are, they'll be Okay, great. That will be great. Yes. yeah, but for that you'll have to give me 124 lakh rupees first. So Yeah. okay,
अब सब लोग कह रहे हैं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सही है. लेट्स अज्यूम मैंने किसी एक बंदे से ये बात पूछी थी जो मेरे सामने, जिसका भी नाम अब्दुल बासित फॉर एग्जांपल नजर आ रहे हैं मुझे अभी. ठीक है, अब्दुल बासित को मैंने कहा यार आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे, इट्स ऑल ऑफिशियल फ्रॉम लर्निंग माइंड्स प्लेटफॉर्म फॉर द बेस्ट जॉब दैट यू हैव डन, टेक इट, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल. सेकेंड पॉइंट, यही बात पे आपको पता चलता है कि यार मैंने और अब्दुल बासित जो मेरे साथ बैठे हैं उन्होंने एक मिलकर एक प्रोजेक्ट किया था. ठीक है, अनम वॉज वेरी हैप्पी विद दैट प्रोजेक्ट एंड अनम सेड कि भाई दिस इज योर रिवॉर्ड 10 लाख रुपए विच इज 1 मिलियन. मगर नवीद साहब आपको 10 लाख रुपए उस वक्त मिलेंगे जब इसमें से कुछ भी अब्दुल बासित ले लें. मैं अब्दुल बासित से ये नहीं पूछूंगी कि कितने लिए, बट मैं ये जरूर पूछूंगी कि यार उन्होंने आपसे पैसे लिए और आपने उनको ऑफर किए या नहीं किए. अब आप उनको 1 रुपए दें, 1 लाख रुपए दें, 5 लाख रुपए दें, 8 लाख रुपए दें, दैट्स योर चॉइस. अगर उन्होंने लेने से मना कर दिया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा. इफ दैट्स द सिचुएशन, वुड यू वांट टू टेक दैट 1 लाख रुपए एंड गिव मी द एनओसी के यस ठीक है मैंने पैसे ले लिया. हम दोनों ने मिलकर काम किया था प्रोजेक्ट के ऊपर, हम दोनों ने इक्वली एफर्ट लगाए थे. ठीक है, पैसे देने की कोई बात नहीं हुई थी. तो मैं आपके पास आया यार 1 लाख रुपए ले लो, अनम ने दिए और बस साइन कर देना कि तुमने पैसे ले लिए. बट अनम मुझे 10 लाख रुपए दे रही थी एंड दैट वाज द केस. इन दैट सिचुएशन विल यू टेक इट? Why? Would anyone want to write why? जो इंसान, it's not fair, अम्मारा कलीम. That is what my point is. That's what my point is कि अब लोग कहेंगे कि नहीं जी मैं नहीं ले रहा बिकॉज यार मैंने आपके साथ मिलके काम किया था और अगर अनम आपको 10 लाख रुपए दे रही है तो आई शुड गेट एटलीस्ट 50%. और अच्छे खासे जज्बाती लोग होंगे 124 में से कि शायद वो कहेंगे यार मैं नहीं लूंगा, लूंगा तो पूरे लूंगा, आधे वरना नहीं लूंगा. Because they think it's perceived, it's not fair, right? जब तक नहीं पता था तो आप मुझे थैंक यू भी बोलते और घर पे मिठाई भी भेजते. जब आपको कहानी पूरी पता चली तो आप, इट्स लाइक रिक्शे वाला, वो खाली चला जाएगा आपको लेके नहीं जाएगा बिकॉज जो पैसे आपने उसको ऑफर किए हैं वो उसको फेयर नहीं लगते. ऑलराइट, सो जब भी आप किसी के साथ पर जो है वो नेगोशिएट करें, अगेन एनीवन इन द वर्ल्ड, आप ये देखें कि क्या वो आपको फेयर परसीव कर रहा है, उसको लगता है कि आप उसके मफाद की बात कर रहे हैं. अगर यस तो ही वुड वांट टू डू एनीथिंग फॉर यू. इफ नो, देन इवन दो इफ यू आर सेइंग समथिंग राइट, तो मिस्टर ए ने किसी को धोखा दिया एंड आई नो मिस्टर ए ने उसको धोखा दिया था. अब वो मिस्टर ए मुझे सही मशवरा भी देगा तो विल आई एक्सेप्ट इट? Right? Yes, वकील, he will not, I will not accept it. Why? Because यार इसने मेरे सामने परसों इसको धोखा दिया है, how can I believe कि वो मेरे साथ जो है वो धोखेबाजी नहीं कर रहा? So it's all about perception. So that is the first thing that we always talk about. We spend a lot of time on creating the right perception because जब तक सामने वाले को आपके ऊपर भरोसा नहीं है कि आप जो बात कर रहे हैं वो उसके मफाद के लिए है. Because people listen to those who talk about themselves, right? So I will listen to my friend if he talks about me. I'll talk to my friend if he'll give me the suggestions जो कि मुझे लगता है मेरे काम आएंगी. Otherwise I'll not spend time. So past bad experience, Tarek, जो आप कह रहे हैं, that is exactly what the problem is. Okay, let's talk about few more good things which can usually help in. All right, हमने बात की थी कि कुछ when it comes to the second part focus का, which is framework के बाद the other party. Have you ever tried to understand कि यार अगर अदर पार्टी ने मेरी बात नहीं मानी, समझी या सुनी या माना, तो what is the batna of the other party? For example, I am the only one who can sell this product which you need. Will my power will be more? Right? The power is going to be more. At the same time, अगर मुझे पता है मैं एक अनम से गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ और मुझे पता है कि नासिर खान ने अनम को ये ऑफर दी हुई है, अब पावर ज्यादा किसकी होगी? अनम की पावर ज्यादा होगी बिकॉज शी विल टॉक अबाउट इट कि यार दिस इज व्हाट आई ऑलरेडी हैव, सो नाउ यू टेल मी व्हाट यू कैन डू फॉर यू. खैर अनफॉर्चुनेटली दिस इज द टूल दैट अ लॉट ऑफ दुकान वालाज एंड सारे लोग इस्तेमाल करते हैं कि आप जिसके पास जाएं उसके पास कोई ना कोई ऑफर जरूर मौजूद होती है और वो शायद है कि नहीं, आई हैव नो आइडिया, बट दैट इज हाउ दे बिल्ड द थिंग्स.
All right. So since it's 3:27, I'll just talk about a few important psychological tools which you can use on a daily basis. So that is one thing which I want to talk about. You should always know where you have to be when it comes to this. Believing in yourself, I always talk about it कि यार ये जो आपका belief होता है ना, ये नजर आता है negotiation के अंदर. So अगर if you don't believe in yourself, in your product, in your service, yeah, whatever you are talking about, there is no way people will listen to you. अब एक इस्तेमाल होता है टूल ह्यूरिस्टिक्स. अब वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेट्स सी. ह्यूरिस्टिक्स होता है assumptions that we take. और वो अगर मैं चाहता हूं कि लोग अज्यूम करें, फॉर एग्जाम्पल अम्मी ने कह दिया तो बात तो माननी होगी, या उनने कह दिया तो बात तो माननी होगी. ओके, दैट इज व्हाट, दैट इज ह्यूरिस्टिक्स, दैट इज योर assumptions. या अगर हम प्रोडक्ट के हवाले से बात करें कि यार मेड इन जापान है तो अच्छा ही होगा. Alright, basically what I am doing is that that would influence my negotiation. So can you apply any heuristics in your day-to-day negotiation? And if yes, then that will increase your power. Reciprocation आप इस्तेमाल कर सकते हैं. Reciprocation क्या होता है कि मैंने अनम की कोई फेवर कर दी, you know, and that had no strings attached कि अनम आपने मेरा ये काम करना है. So that was nothing of that sort. But जब मैंने अनम का एक काम करवा दिया, she was like thank you so much and everything. कल को अगर मैं कहीं फंस गया और अनम can help me and support me, yeah, if you can help me and support me, would you do that? Yes or no? A lot of people are saying yes, right? And even though there was no agreement between us, ओके, कि यार अगर मैंने आपके लिए कुछ काम किया तो काम करोगे. इट्स जस्ट ह्यूमन टेंडेंसी कि अगर मैं कोई ऐसी अच्छी बात भी कर दूं जो आपको अच्छी लगे, तो इन रिटर्न नेगोशिएशन इज नथिंग. मैं लोगों को यूजुअली बोलता हूँ ना यार, सब सब छोड़ दो, एक बच्चे को ऑब्जर्व कर लो एंड यू विल नो हाउ नेगोशिएशन विल वर्क. राइट. तो फॉर एग्जांपल आप बच्चे को हंस के देखोगे तो वो क्या करेगा, वो मुस्कुराएगा. ओके, अगर आप गुस्सा करोगे तो वो क्या करेगा, वो गुस्से में आ जाएगा. राइट, एंड दैट्स व्हाट एक्चुअली हैपेंस ऑन अ डे टू डे लाइफ. कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर नेगोशिएशन. मैं एक बात कहता हूँ विद कॉन्फिडेंस और मुझे पीछे कुछ भी नहीं पता, 80% will believe it's the right thing. Same is the case with when I am not confident at all and I'm saying the right thing. So मैं कह रहा हूँ यार मैं मेरे ख्याल you know मैं ये बहुत अच्छा फोन है, बहुत अच्छा फोन है, प्लीज ले ले. And if I'm saying it with confidence, this is not used, I've never used it, it's just 2 days old, I have all the invoices, I can prove it. The way you speak will impact the influence that you will have on people. That brings us to the last two things that we have to cover. Here, how my emotions कहाँ से आते हैं? Where do we think emotions come from? Not actually Bilal जो आप कह रहे हो, but yes, we can talk about it this way. Thought process, बिल्कुल बिल्कुल थॉट प्रोसेस से आता है. अच्छा, नेगोशिएशन का एक और टूल था जो मैं शायद आप लोगों को बता दूं तो बेहतर है, वो अगेन लॉट ऑफ पीपल यूज, and that is also anchoring. So I'll come back to this. So the brain, the experience, the heart, unconscious experience, how close you are to someone, so that's where emotions come from. Emotions come from your thought process, right? Okay, for example एक ग्लास टूटा. लेट मी शो यू, इन फैक्ट आई थिंक यू विल लव इट मोर. लेट मी शो यू. एक ग्लास टूटने की आवाज आई और उसके बाद आपका इंटरप्रिटेशन था कि अब अम्मा की आवाज आएगी, क्या हुआ. तो आपके इमोशंस के साथ क्या होता था? लेट मी से. तो दैट वाज योर मदर्स फेवरेट सॉसर, और एक अचानक से आवाज आई टूटने की और उसके बाद फॉलोड बाय अम्मा की आवाज. फिर क्या होता था?
मार पड़ने वाली है, फेयर, टेंशन, डर, एक बंदे ने बोला ड्रोन हमला होगा चप्पलों से, you know. So that's what would happen. So where that emotion is coming from, it's how you interpret your situation, right? How you interpret your situation. So khair, so the topic that I want to talk about is कि अगर मैं इसी को चेंज कर दूं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि यार ग्लास टूटा, कोई बात नहीं, मेरा हिसाब ये है कि ग्लास टूटता है तो यार बुराई टल गई, यू नो, कोई बलाएं टल गई, हाउ वुड माई इमोशन विल चेंज? माई इमोशन विल बी अच्छा हुआ यार जान छूटी। अगेन आई वाज सिटिंग एट वन प्लेस और उस बंदे ने मुझे कहा कि यार कभी भी कुछ चोरी हो ना तो बड़ा खुश होना चाहिए, कभी कोई चीज़ चोरी कर ले, कोई धोखा दे दे, तो यू शुड बी वेरी हैप्पी अबाउट इट। आई एम लाइक व्हाट द हेल इज ही टॉकिंग अबाउट, मतलब डजंट मेक सेंस। एंड ही वाज लाइक यार देखो भाई, चोरी उसने कर ली, तुम कुछ कर सकते थे? मैंने कहा नहीं कर सकता था। उसने कहा चोरी हो गई, मैंने कहा हो गई। उसने कहा अब क्या करोगे? यू कैन नॉट टेक इट बैक, राइट? नहीं। क़यामत में मिलेगा वापस? मैंने कहा मिलेगा। जब वो देने आए तो मना कर देना चाहिए। बोले आपका फोन, बोला मैं क्या करूंगा, यहाँ तो सिग्नल भी नहीं आते। नाउ व्हाट विल यू डू? उसकी नेकियां लोगे, अपने गुनाह दोगे। सो इफ योर थॉट प्रोसेस चेंजेस, कोई आपके साथ गलत भी होगा तो यू विल बी हैप्पी अबाउट इट, राइट? सो द रीजन व्हाई आई एम सेइंग इट इज कि जो आपका इमोशन होता है ना, वो नजर आता है। तो अगर आप किसी के पास गए और आपका माइंडसेट ये है कि यार ये मेरा सुनेगा नहीं, ये मेरी बात मानेगा नहीं, राइट? इवेंचुअली व्हाट्स गोना हैपन, ये आपके ऊपर नजर आएगा, आपके इमोशंस पर नजर आएगा कि यार द पर्सन इज नॉट कॉन्फिडेंट, एंड इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट देयर इज नो वे यू कैन कन्विंस मी टू डू समथिंग। सो अगर उसी थॉट प्रोसेस को चेंज कर दें, यू विल हैव फियर। मैं उसके लिए एक्टिविटी करवाता हूँ यूजुअली, इनफैक्ट लेट्स डू इट राइट नाउ, वो हम कर सकते हैं बिल्कुल। एंड दैट इज, जो जो लोग अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं वो किसी भी इमोशन वाली शक्ल बना लें। वी डोंट नो व्हाट दैट विल बी, you know, it can be angry, it can be happy, it can be surprised, it can be satisfied, it can be any emotion you can think about. Okay, and then one by one we'll ask people if they can see that on you. Okay, and then again if you are happy and satisfied, and then see what happens. So let me see, लोग की शक्लें देखता हूँ मैं, मुझे कौन कौन नजर आता है। All right, I can see myself. I'm not, वकास गुल को मैं देख सकता हूँ, एहसन खान को देख सकता हूँ, जिशान, उमैर। So I'll just talk about a few people and then we'll see. Okay, starting off with वकास गुल। वकास गुल को देख के क्या लगता है? Is he happy? He's sad? He's satisfied? He's angry? He's what? He is happy. Okay. ठीक है. Moving on. Very good. Aisha Mughal. Let's start off with you. You can make any emotion you want. Is this your emotion? Or you're just laughing? Okay. Let's see. अरे मैंने खुद ही बता दिया इसका जवाब तो. ठीक है. Let's go to someone else. Babar Zaki. Oh my God. बाबर जकी क्या कर रहे हैं? बाबर, if you don't mind, do it again, please. Surprised and shocked. Okay. See, so you can see it on people. Okay. तो अगर मुझे लग रहा है, अब उसको मैं थोड़ा सा कंक्लूड करता हूँ within 2 minutes. Thank you so much, everyone. Let's conclude it now. So what I'm saying is कि यार देखो, start and then we'll talk about communication. अगर मैं बहुत बात की जा रहा हूँ, अनम की समझ नहीं रहा, बोले जा रहा हूँ, would you like to listen to me? The answer is no, right? अभी अनम ने बात कंप्लीट नहीं की और मैं फौरन जवाब दे दूं, you know, you always like to talk to people who give you respect. Okay, और अनम अगर मुझसे कोई बात कर रही हैं, how will I give the respect? Is by understanding, by listening, by rephrasing, and then talking about my point. Okay, हो सकता है अनम जो कह रही है वो गलत है, जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, but it's my job to at least listen to the other person and then give my comments, because वो सामने वाले को नजर आता है कि आप रिएक्टिव डिवैल्यूएशन कर रहे हैं
या you are listening and then giving your ideas. These are two different things altogether. So if you are doing reactive devaluation is कि यार जो भी अनम ने बोला है ना मैं उसको रिजेक्ट कर देना है, उसने कहा एक काम करते हैं, आज हम पूरी लर्निंग माइंड्स की टीम जाते हैं, कहाँ जाते हैं हम लोग, आई एम वेरी बैड इन रिमेम्बरिंग द, अनम व्हाट्स योर फेवरेट रेस्टोरेंट? Okay, I just heard about this new burger joint. I would like to go over there. I don't want to publicize it right now, but we are actually planning. We'll let you know soon about it. ठीक है, तो मैं नहीं No यार हम यार lies, yeah. नहीं नहीं नो बर्गर यार, वी शुड गो टू कोलाची फॉर कढ़ाई, यू नो, अभी मैंने सुना भी नहीं और मैंने आगे बोल दिया, एंड दैट विल बी विजिबल, Okay. यार दिस पर्सन इज नॉट लिसनिंग टू मी, यू नो. अगर मैं कहता अच्छा बर्गर जाना है, व्हाट डू यू थिंक इज देयर, क्या उनका मेन्यू है, यार एक काम करते हैं ना, हमारे साथ 4 5 8 बच्चे भी तो होंगे, दे विल नॉट लाइक इट और दे विल लाइक इट, यार उसकी लोकेशन अच्छी नहीं है, but whatever the case is, so you talk about your points, let Anam talk about her points, and that's how you make the decision. Otherwise it will not end up very well. And then how you walk, how you talk, मैं एक और पिक्चर दिखाता हूँ, and then I'll just recap and connecting again the dots with the real life. मुझे एक बात बताइएगा, uh, इन साहब से आपने मेडिकल एडवाइस कोई लेनी है, आप एक हॉस्पिटल में गए, ये साहब चलते हुए आ रहे थे, ओके, आप एक हॉस्पिटल से गए, लेट्स से साउथ सिटी आगा खान व्हाटएवर, और ये चलते हुए आ रहे थे, वुड यू टेक एडवाइस फ्रॉम हिम, यस और नो? A lot of yeses and a lot of no's, and again you can have your own perception behind it. Second, अब मुझे बात बताएं, you see this person, would you take medical advice from him in the same hospital? Never. No. Okay, why? It's the same person, right? But it's how he's dressed. तो आप अपनी पैकेजिंग कैसे करते हैं? Because I've been teaching marketing, I've been providing marketing consultancy. You know, packaging plays a very important role, and your packaging will help in negotiating better. Again, be it with anyone, but आपकी packaging relevant होगा. Again, the key word is relevant. If it's relevant, आवाज you'll क्यों नहीं be आ रही able to इसकी? negotiate more. A very good example would be banks अपने ब्रांच मैनेजर्स उस एरिया के उठाते हैं जिस एरिया में वो उधर से ब्रांच, उतारनी है, ये सारा का नजर आ राइट, रहा ये आवाज, ओके, सो बैंक्स क्या करते हैं कि अपने ब्रांच मैनेजर्स उस एरिया के उठाते हैं, एंड द रीजन इज नॉट दैट कि अदर डज नॉट नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, but when it comes to negotiations, when it comes to connecting the dots, when it comes to understanding what people need, having good examples, they will be able to connect with that person more और अपनी बात आप मनवा लेंगे, ठीक है ना? So that is and it's not just personality. Yes, personality plays a very important role, but there are a lot of other variables which would help you to connect with the other person in one way or the other. So I'll just take 2 or 3 more minutes to explain exactly what are the things that I always believe we should talk about in negotiations, and then I'll open it up for questions, and then जो भी आपके questions हों या जो भी comments हों या जो भी examples हों, we can just talk about it, listen to it, and then that's how we will end today's session. So हमने बात की कि यार नेगोशिएशन के लिए ना सबसे पहले माइंडसेट बहुत ज़रूरी है, अगर माइंडसेट बेहतर है तो उसके बाद हम आगे बात करते हैं. अगर हमें लगता ही है कि यार देयर इज we'll always do reactive devaluation, दूसरा जो बोलेगा वो हमारे खिलाफ ही बोलेगा, then we'll never be able to negotiate, right? We talk about negotiation styles. Everyone has different style. There is in fact a proprietary tool which we usually use when it comes to negotiation styles, जिसके अंदर 10 different variables हैं, from openness to contract related to being formal, informal, whatever the case is, and that helps us to know exactly अगर मेरे पास 180 लोग इस कमरे के अंदर हैं तो अनम से सबसे ज्यादा, and I can show it analytically, अनम से सबसे ज्यादा बेहतर नेगोशिएशन कौन कर पाएगा based on that
quantitative tool that I am talking about. We talk about perceived fairness. Fairness has a lot to do with negotiation. If I think you are not fair with me, I will never work with you, right? Then we talk about principled negotiation कि यार जब भी आप बात करो ना तो you always talk to that person कि अनम जो मेरा और आपका मसला है ना, let's separate people from the problem, let's focus on the problem, we both are working together to solve the problem, let's try to generate more options कि यार हम इस मसले को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. मैंने कहा कुलाची जाना है, आपने कहा बर्गर जॉइंट जाना है, लेट्स टॉक अबाउट इट यार, और क्या क्या ऑप्शंस है, लेट्स ट्राई टू जनरेट मोर ऑप्शंस. ओके, सो दैट्स आल्सो प्रिंसिपल नेगोशिएशन. हम एक और बात ये भी कर सकते हैं कि हम जो भी डिसीजन लेंगे ना वो किसी क्राइटेरिया के ऊपर लेंगे, and that is also one thing which plays a very important role. Let's try to find out what would interest people. हमने कहा काम करो यार, हमारे पास कोई 25 लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना, so let's talk about, let's take a poll from them, देखते हैं कौन किसकी क्या ख्वाहिश है और उस हिसाब से डिस्कस कर लेते हैं. That way even if we choose my option or Anam's option, okay, eventually what's going to happen, ना मुझे बुरा लगेगा ना अनम को बुरा लगेगा ना हमारा रिलेशनशिप खराब होगा. So it's all about being, fair by the end of the day, because she will know that that was the fair decision to make. हमने कहा कि believe in yourself, because when you talk about all the good things in life that you have, that shows. और उसके बाद जब किसी के सामने बैठ के बात करते हो ना तो उसको भी आप रेलेवेंट लगोगे, बेहतर लगोगे, and that will again help you to negotiate. Mirror neurons play a very important role. We have talked about हम लोगों ने यूरिस्टिक्स की बात करी. एंकरिंग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है नेगोशिएशन के अंदर इन अ डेली लाइफ. फॉर एग्जांपल आप एक गाड़ी खरीदने गए और आपने कहा कि यार इस गाड़ी के तो मैं इतने लूंगा. मैंने कहा यार कल तो मैंने देखा था इस गाड़ी के इतने पैसे मुझे लगा दिए. या आप ये कह सकते हैं कि इफ़ यू गो टू parkwheels.com you will see कि यार इस गाड़ी की एवरेज प्राइस ये है. If you go to Wawa Cars or if you go to Car First, this is the average price. What are you trying to do? आप एंकर कर रहे हैं कि यार इस पे तो स्टार्टिंग पॉइंट है, अब इससे ऊपर जाते हैं या इससे नीचे जाते हैं. इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड वी टॉक अबाउट बैटनर्स एंड वी टॉक अबाउट बैटनर एनालिसिस और उसके हिसाब से एंकरिंग क्या होनी चाहिए. शुड यू थ्रो योर प्राइस और शुड दे थ्रो योर प्राइस. एंड अगेन दैट्स एन अगेन अदर डिबेट ऑल टुगेदर. एस्केलेशन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं पर्सनल लाइफ के अंदर व्हेन इट कम्स टू नेगोशिएशंस. एस्केलेशन क्या होता है? कुछ लोग होते हैं बड़े जज्बाती. मैं यूजुअली एक 100 रुपए का ऑप्शन करवाता हूँ अपने ट्रेनिंग के अंदर. अब क्या होता है वो 100 रुपए पे लोग 1000 रुपए भी लगा देते हैं एस्केलेशन की वजह से कि यार ये तो मुझे ही चाहिए, ये तो मुझे ही चाहिए, दिस इज व्हाट आई वांट. ओके, and then I'm sure a lot of people may have seen stock exchanges or have traded in stocks. A lot of people may have seen कि वो जो auction, live auction होता है for products or services, और Japanese गाड़ियों का जिस तरह से होता है, within a millisecond you want to buy something and then eventually end up paying more for it. Why? Because there's a concept called escalation. हमने रेसिप्रोकेशन की बात की. अगेन इमोशनल इंटेलिजेंस इज अगेन अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. एंड एक उसमें हमने सिर्फ बात की, एंड दैट इज जो आपके दिमाग में चल रहा होता है वो आपकी शक्ल पे दिख रहा होता है, और जो आपकी शक्ल पे दिख रहा होता है वो ही एक्चुअल चीज़ हो रही होती है. सो इवन इफ यू से कि यार मेरे हिसाब से दिस इज द बेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम एवर, if you don't believe in it, it's just going to show on your face. And if that shows on your face, there is no way you'll be able to sell this program to me. और उसके बाद हम लोगों ने कम्युनिकेशन की बात की कि यार again एक question. Omar, thank you so much for this question. We'll talk about it. One more minute and then we are done. Body language, tone of voice, your overall interaction, the kind of language you use, the kind of tone that you form. There are a lot of exercises which help you to build your voice in a certain way, but that eventually is what negotiation is all about. So I know we did not have a lot of time, so that was the main things that I usually talk about. uh, Anam, I think if there is any question, please let me know, and then we'll try to Exactly. answer all the questions. Exactly. So I think, Naveed, you did share a lot of comprehensive information regarding how these concepts can be, used in our daily life. So we started off, just summarizing it up, we started off with how changing the mindset is important even before starting the negotiation. You have to work on the mindsets. We talked about being relevant. We talked about perceived fairness, principled negotiation, and then there were a lot of points regarding showing value to the other party, being fair in your negotiation.
negotiations, bringing in confidence in your communication, and whatever you are showing to the other party, that matters a lot. And in the last portion, we also talked about the role of emotional intelligence. However, now we would like our participants to share in their questions, and already we have a few coming in. We had one question from, I just missed out on the name, I think, but yes, this was Vakas Gol, and he was talking about body language. He wants a bit of more clarity in how body language can impact negotiations. All right. Uh, Again, there is just one activity if you would want to do very quickly. और आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ एक काम करना है और फेयरली आपको अभी अंदाजा हो जाएगा, ठीक है? And I'll just connect it with the body language. I'll just say 1, 2, 3 and clap. That's all I will do. So when I say clap, you need to clap. That's it. और कुछ नहीं करना, ठीक है? A very simple thing to do. Okay? So 1, 2, 3, clap. सोच के नहीं करना, फौरन करना. ओके, सो 1, 2, 3 क्लैप. ओके, 1, 2, 3. जितनों ने क्लैप किया ना, गलत क्लैप किया. Why? Because I never said clap. This proves कि जो दिखता है ना, वो माइंड पहले प्रोसेस करता है, और जो सुनता है वो बाद में प्रोसेस करता है. एंड दैट्स व्हाट बॉडी लैंग्वेज इज ऑल अबाउट, राइट? कि अगर आप, और आई एम श्योर आप देख के बता सकते हो कि बंदा कॉन्फिडेंट है, ज्यादा चौड़ा होने की कोशिश कर रहा है, हम्बल है, रिस्पेक्ट देने की कोशिश कर रहा है, या आप अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है. एंड दैट्स व्हाट दिस कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट, राइट? तो इफ आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स, I'll have a different body language. If I'm in front of my parents, I will have a different body language. Okay? And that is the first thing that is being communicated to the other party कि जी मैं आपकी बिल्कुल इज्जत करता हूँ, respect करता हूँ, and let's talk about it. So I hope this answers the question. Perfect. We have another question from Amara Kaleem, and she says, what if other party is not based on openness, if he or she is based on reactive evaluation? Then what should one do? Okay, reactive devaluation obviously आप भी कर सकते हैं और दूसरा भी कर सकता है. That's how it is. Just try to get to the root of the problem. और वो आपको आहिस्ता आहिस्ता बावर कराना पड़ता है दूसरे को. कि फॉर एग्जाम्पल एक अगेन एंड एक सिंपल टेक्निक होती है जो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग में बहुत इस्तेमाल करते हैं, एंड दैट इज 5 whys. दैट्स इट. why एंड यू गेट टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम. तो आपने कहा यार मशीन जो है ना उसका फ्यूज बार बार उड़ जाता है. हमने कहा वाई? यार फ्यूज इसलिए उड़ जाता है कि वाइब्रेट बहुत करती है. तो फ्यूज उड़ जाना वाज नॉट द प्रॉब्लम, वाइब्रेट बहुत करती है. अच्छा, आपने कहा वाइब्रेट करना इज द प्रॉब्लम? नहीं जी, वाइब्रेट क्यों करती है? उसके अंदर का जो बुश है वो कटा हुआ है. ओके, दैट्स द प्रॉब्लम? नो, बुश कटा हुआ क्यों है? बिकॉज हम लोगों ने जो लास्ट टाइम डलवाया था वो क्वालिटी अच्छी नहीं थी. क्यों? क्योंकि जो असल वेंडर है उसके पास अवेलेबल नहीं है. So that is the problem, that we don't have that available. So in the same way, if someone has some kind of reactive devaluation and you think it's the reactive devaluation, try to find out why that person thinks what he thinks. When you do why, you'll get to the root of the problem. I was working for अभी हम लोगों ने बहुत सारे सेशंस कराए negotiations पे for a leading company, and उधर उसने कहा यार मेरा काम जो है ना, मैं law, he was handling all the legal proceedings. एंड ही टोल्ड मी कि यार हमारे पास एक बहुत ही बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल थे और वो पेमेंट नहीं करते थे उस यूटिलिटी की जिस कंपनी के लिए हम ट्रेनिंग करवा रहे थे. एंड ही वाज लाइक यार मेरी शान के खिलाफ है कि मैं तुम लोग को बिल पे करूं. सो दैट वाज हिज व्हाई फॉर नॉट पेइंग द बिल्स. फिर ऑब्वियसली उससे बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ, व्हाई यू डोंट वांट टू पे, व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन, and then eventually we had to change the mindset and it worked. So I hope this basically answers the question. Perfect. So getting to the root cause is the answer for this question, Amara. And the next one is, if the second party is not ready to listen and talking with a negative mindset, then how the situation should be tackled? Okay, अगेन बहुत बार हमें लगता है कि द अदर पार्टी इज नॉट लिसनिंग. तो पहला तो क्वेश्चन यही होता है कि आर वी ऑल्सो लिसनिंग, और वी आर ऑल्सो सेइंग कि नहीं जी जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है और वो नहीं सुन रहा मेरी. तो अनम जो मैं कह रहा हूँ ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप नहीं सुन रही मेरी. तो बेसिकली व्हाट्स हैपनिंग इज कि मैं ये तो गिला कर रहा हूँ कि आप मेरी नहीं सुन रही, बट एट द सेम टाइम मैं भी वही कर रहा हूँ कि मैं भी आपकी नहीं सुन रहा, है ना. सो इफ समवन इज नॉट एबल टू लिसन, यू स्टार्ट लिसनिंग टू देम.
There will be a time that they will understand कि अरे हाँ यार ये तो बात सही कह रहे हैं. So Perfect. that's the only way to go about it. And the next question, Naveed, you'll be happy to hear. This is very much pertaining to our daily life situations. And this comes from Umar Ibrahim. How to convince your conservative elders? How can we negotiate with them? अगर ये उसी काम के लिए कह रहा है जिस काम के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं तो फिर वो अलग सेशन करना पड़ेगा. बट देखो, conservative, again we are just using that word which means we are saying that they don't listen. ठीक है. What is the reason why they don't listen? या what is their why? You need to get to that. जैसे बहुत बार लोग बोलते हैं ना, मेरी बॉस मेरी सुनता ही नहीं है, या मेरे अब्बा मेरी सुनते ही नहीं है, यू नो. बट वो ये बंदा भूल जाता है कि जब अब्बा ने उसकी सुनी या जब बॉस ने उसकी सुनी, उसने गलती की. जब उसको इंडिपेंडेंट कोई प्रोजेक्ट दिया, वो सही पूरा नहीं हुआ, अब वो क्या करता है, वो माइक्रो मैनेज करता है. राइट. आई एम नॉट सेइंग दिस हैपेंस, व्हाट आई एम सेइंग इज कि गेन द ट्रस्ट ऑफ द अदर पार्टी. हम एक एक्टिविटी करवाते हैं, आई एम श्योर यू मस्ट यू सॉ दैट, वो सिंपल ब्लाइंड फोल्ड वाली होती है ना. ब्लाइंड फोल्ड में एंड पीपल आर विलिंग टू लिसन टू द अदर पर्सन. जो भी वो कहता है वो करने के लिए तैयार होते हैं. वो इसलिए होते हैं कि दे ट्रस्ट दैट पर्सन. सो इफ दे नो दैट द डिसीजन दैट यू रियली वांट टू मेक इज द राइट डिसीजन, they will trust you, they will support you. Otherwise they will think कि नहीं यार ये सही नहीं है, इसने सोचा नहीं है, he has not thought about it. So you should also have whys for your point of view कि मुझे ये करना है, बस मुझे नहीं पता, मुझे यही करना है. That's wrong. क्यों करना है, क्या फायदा है, how it's going to impact them, how it's going to impact their life. Use emotions, use communications, and you'll be able to convince. Perfect. Perfect, Naveed. And there are few, in fact, more than a few questions regarding deadlock. So we have this one from Aisha Mughal. This works with 3 phases: exchange, information, bargain, closing, but still how to close the deadlocks. Then Bakas Gul also asked that how we can avoid deadlocks and how to handle if the deadlocks occur in our negotiation. So a bit of your views on that. Okay. By deadlock we mean कि यार बात नहीं बन रही. Okay. So बहुत बार you have to use some psychological tools. एक होता है good cop bad cop, you know, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि I'll be really 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 strict, I will not leave you. और एक आपकी ही टीम में बंदा है जो बोलेगा यार देखो थोड़ा सा ये कर लेते हैं, थोड़ा सा वो कर लेते हैं. वो बचपन में जो है ना वो बड़ा देखा था हम लोगों ने लोगों को करते हुए, but then eventually it does make sense. Second ये हो सकता है कि sometimes, अच्छा व्हाट इफ आई नो कि मैं अब अनम से बात करूंगा तो हमारा झगड़ा हो जाएगा या हमारा डेडलॉक आ जाएगा. आई शुड नॉट टॉक अबाउट दैट टू विद अनम. द रीजन इज डेडलॉक पे आना बड़ा आसान है, उसके बाद रिवर्स होना बड़ा मुश्किल है. सो मुझे पहले ही रुक जाना चाहिए था. आई शुड हैव ट्राइड टू फाइंड आउट समवन शी रियली रिस्पेक्ट्स एंड शी रियली एडमायर्स, and then I should have gone with that person to her. So that way there will always be a possibility. Yeah, though I should have done my homework why she thinks there's a deadlock. And again, it all boils down to the research that you do. So if I know what will work, what will not work with Anam, I'll probably be in a better position to solve that. Then we come to a scenario where Abdul Basit says how to negotiate when the person is so loud and aggressive. So the other party is being upset and aggressive, and we have to make negotiation over there. Okay, so I think that is one thing which Anam हम लोगों ने एक और भी किया था, handling difficult conversations. So anger management is a different game altogether, right? How to manage the anger of the other party. बट आपने ये देखना है कि क्या आप कोई ऐसा इमोशनल हॉट बटन तो नहीं दबा रहे जिससे वो एंग्री हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई आता है ना और ये बोलता है यार यकीन मानिए बाखुदा मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला है, मुझे होता है सबसे बड़ा झूठा यही, यू नो. सो दैट इज माई इमोशनल हॉट बटन. इट मे नॉट वर्क आउट विद एवरीवन एल्स, राइट. फॉर सम पीपल सर्टेन अपीयरेंस वाले लोग हमेशा धोखेबाज होंगे. अच्छा वो ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि शायद इस तरह का बंदा कोई इनकी जिंदगी में आया जिसने धोखा दे दिया, यू नो. तो आपको ये देखना है कि क्या आपने कोई ऐसा इमोशनल हॉट बटन तो टच नहीं कर दिया, आपने ऐसा कोई वर्ड, फॉर एग्जांपल यहाँ पर गाड़ियों का एक्सीडेंट होते हैं कराची शहर में, पता चलता है सामने वाले ने उसको गाली दे दी, उसने उसको गोली मार दी, यू नो. सो व्हाट वाज द ट्रिगर? दैट वाज द गाली व्हिच वाज गिवन. So we need to find out
that what is that emotional hot button which we are touching, which is making that person angry, and what is the change that we need to bring in our situation that would not make him angry, and that's the way to go about it. All right. I think my next question would be the last one, but there I've kind of summed up 2 or 3 questions that were coming related to confidence, Naveed. So there was one person who just said that, a lot of political leaders, how they use confidence to, make fool out of Yes. people. And this True. happens in our daily lives as well. And then Yes. there is another scenario which is about confidence only, that what does if the boss shouts and intimidates to such an extent that you lose your own confidence and you're blank and unable to negotiate in that particular situation. So this misuse of confidence in negotiations, that is Okay. what people are asking about. Okay. Confidence is a psychological tool, right? So you can use it on others to negotiate your way. तो यहाँ पे सब लोग क्लियर है. मसला ये आता है जब सामने वाला वही चीज़ हम पे इस्तेमाल करता है. यही बात हो रही है ना. सो अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आई एम हैप्पी कि नबी साहब ने बताया जी कॉन्फिडेंस इस्तेमाल करो, कॉन्फिडेंस के साथ जो है ना आप कुछ भी बेच दो, लोगों को पता ही नहीं चलेगा. The problem is if someone is using confidence on you, someone is trying to intimidate you, someone is trying to use that voice that we are talking about, that communication that we are talking about, और हम कुछ बोल ही नहीं पाते, then again वो बंदा यहाँ पर है, आप यहाँ पर हैं फॉर एग्जाम्पल, देन यू नीड टू नो हाउ टू गेट अप टू दैट प्लेस. आप एक अपने काम करें, आप होमवर्क करें नेक्स्ट टाइम, एंड अज्यूमिंग अ बॉस एंड अ सबऑर्डिनेट सिचुएशन, नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगा ना, मुझे पता है मैंने बॉस को बोलना है, एंड आई अज्यूम दैट बॉस ने रिएक्टिव इवैल्यूएशन करना है. मैं बोलूंगा बॉस आई थिंक दिस इज व्हाट वी शुड डू टू इंक्रीज आवर मार्केट शेयर बाय 5%, और बॉस ने बोला भाई क्या बेकार तरीन आइडिया दिया है तुमने, और आप परेशान हो गए. अब आपके पास 25 वाइज होने चाहिए. Why I am saying what I am saying. To be very honest, if he's someone who is work oriented, who is job oriented, he will eventually like you. But if you yourself do not have the reasons, because एक चीज तो पक्की है ना कि he does not trust you, he does not think you are good enough for giving any suggestions, for example, और उसको बयान करने का तरीका उसके लिए शायद एंगर है, उसके लिए शायद रिस्पेक्ट नहीं देना है. सो यू नीड टू डू योर होमवर्क इन सच अ वे कि यार इस प्रोजेक्ट के बारे में मुझसे 200 सवाल पूछ लेंगे ना, मैं 200 सवाल के जवाब देने के लिए तैयार हूँ. एक बार आपने वो कर लिया, यू गेन दैट ट्रस्ट, देन दैट पर्सन विल बी ब्लाइंड फोल्डेड, और आप उसको लेफ्ट बोलेंगे तो वो लेफ्ट करेगा, राइट बोलेंगे तो वो राइट करेगा, एंड दैट्स द ओनली वे. बट ओवरनाइट कोई चेंज नहीं आता. We need to know that overnight nothing can happen. It will have series of steps, and then eventually you reach to that point. Perfect, perfect. And that's where we have reached to our time. It's 4 p.m. now, and we'd like to conclude the session. It was amazing, amazing audience. Like literally, I'm sure Naveed will agree to this as well. The I kind of loved it. the kind of questions, scenarios, and the energy that you guys were throwing back, that was amazing. So what we would like now is that we would like that अगर अभी किसी की videos off हैं तो वो थोड़ी देर के लिए video on कर ले. We'll like to take a screenshot of the participants who have joined us today, and who हम लोगों ने अगर कोई questions हमने नहीं answer कर पाए, so I would just type in this email address. So if you have any other queries regarding negotiations skills, or if you plan or think to conduct this particular training for your organization, we have a lot of HR professionals here as well, a lot of business professionals as well. So I'm writing the email address where you can bring in your queries, and we'll be more than happy to facilitate you. This is info@learningmindsgroup.com, and you can write in your queries over here, and we would be welcoming you all to answer all those. And we'll just take a screenshot now. We'll ask all of you to get ready with a smile on your face. And here we go. That's done. Thank you for being a wonderful audience. Any concluding remark from your side, Naveed? Okay, and yeah, exactly what I wanted to say. Thank you so much. I think it was a good experience together.
Thank you for continuously typing on the chat box because मज़ा उसी में आता है जब interaction हो, आपकी बातचीत हो. Obviously अगर हम और face to face personal बात करते, but you know, to be very honest, एक concept हमने कोई 25 concept की बात कर ली, एक concept तरीके से करें ना तो उसके लिए भी 1 घंटा is not enough, right? So I hope Exactly. I was able to do justice with a few things that we talked about, but trust me, these are so powerful. I'll just end up with one rule of 40 days that I always talk about by the end of the session. कोई भी चीज अगर आपको अपने अंदर इनबिल्ट करनी है ना, बी इट कॉन्फिडेंस, बी इट एनीथिंग, यू नीड टू प्रैक्टिस दैट फॉर एटलीस्ट 40 days. ओके, एंड 40 consecutive days. दुनिया में कोई ऐसा ट्रेनर नहीं है जो एक दिन में आपकी जिंदगी बदल सके. So we can talk about the concepts, we can tell you exactly how it works, but if you really want to build in, you want to make sure that it's part of you, do it for 40 days, and inshallah you will see the difference. And second request that I usually do is tell others about it. यू नो, सो जो भी आज आपने देखा, हो सकता है कि 4 चीजें आपके लिए रेलिवेंट हो. स्टार्ट टेलिंग अदर्स अबाउट इट. You will get more respect, people will trust you more, you will spread the knowledge, they will tell you something good, and the cycle will go on and on and on. So thank you so much once again for your time, and thank you so much, Anam, for organizing it and for getting all the participants on board, and that's what I would like to say. That's amazing, Navees. Thank you for sparing out time. Thank you, all the participants. And we would be looking forward to the same participation next Friday as well. We'll be sharing with you the topic and our trainer for the next week really, really soon. Take care of yourself. It's me and Naveed signing out from here. Allah Take care. Hafiz. Allah Take Hafiz. care. Bye bye. Allah Hafiz. Allah Hafiz.